सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जीडी का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज जीडी डे 3। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मणिपुर क्राइसिस, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज फ्यूचर। ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज फ्यूचर, उसके बारे में वी हैव टू डिस्कस। आर यू ऑल कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक? डू यू हैव एनी इन्फो? सबके पास इंफॉर्मेशन है, सबने पढ़ लिया होगा क्योंकि कल बता दिया था मैंने। ठीक है। अपना बेस्ट फुट रखना है हमेशा, बसड़ नहीं मचाएगा कोई भी। प्लीज मेक इट अ गुड डिस्कशन। इट इज अ डिस्कशन, सो मेक इट अ डिस्कशन। डू नॉट मेक इट अ डिबेट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डिबेट एंड डिस्कशन। वंस आई से गो, यू हैव टू स्टार्ट। ओके, रेडी, गो। Okay, Good evening, so gentlemen. conflict As between you the all Cook know, and the the topic Metis for tonight's going GD on. is money. Okay, Ankush, go on. You go first, please. Good evening, gentlemen. As you all know, the topic for tonight's GD is a Manipur conflict. So, starting with that, basically Manipur conflict. What is it and how it started? Manipur conflict is in between two separate community groups, Kuki and Meitei. Meitei Meitei is basically a Hindu majority with little bit of Muslim population, while Kuki is Christian. But due to their previous ongoing conflicts and cross-border narcotism, terrorism, this has led to major conflicts in Manipur. I would love to hear all your thoughts as well. Okay, Ankush, I want to say one thing. What you are saying is all the factual information which we can find on the internet. I think the purpose of the discussion should be why is the conflict happening and what is the grassroots of the conflict. Actually, ethnic conflicts, if you talk about ethnic conflicts or any other conflicts between two communities, has a deep root of it has a history on its own. We can see in any other country like Sri Lanka or Myanmar, same kind of conflicts happens in our country. Ethnic communities, the fight between ethnic communities is also happening. So why is this happening, and why isn't that this conflict hasn't been resolved? That's the main issue, and I think personally that we should look at the solutions. We should, as an officer, I think we should look at the solution and how this kind of conflicts can be resolved without any much further violence. See, generally, So as a majority of the conflicts, they are between two groups, Kuki and Meitei. Coming on to the most root cause reason for these conflicts is basically Kuki, which is a Hindu majority group. It was planned to be shifted into scheduled tribes group, and this status was already given to the Kuki group. Cookie So group is gentleman is a Christian. yeah, that is what I'm saying. The ST scheduled tribe status and other benefits, they were given to Kuki already. But when Meitei was being transferred to that, so Kuki people thought that okay, so with this our entitlements and competitions and reservation, it is going to increase. This was the root cause. Surrounded with Myanmar, it there has been many cases of cross-border terrorism from Myanmar. That is another reason. Cross border crossing illegal migrants, that is also a reason. Apart from that, main reason is narcotism. This has been said by I'm sorry, I don't remember the name of that officer, but he was the GOC of Eastern Command. This he said that main reason for this along with the communalism conflict is narcotism and cross-border terrorism. So if we want to solve, obviously, which we have to, as it is part of our nation, but we will have to first stop the cross-border terrorism. Then we will have to take few bunches of people who are representing those groups to a white area so that we can sort out and bring the best. And this has also basically this has started as we are discussing. Things are setting place right now, but obviously the Manipur, it has went back again to 10 to 20 years back. I think we are all have heard about Ankush. So anyone
wants to add some point. So I want to just add one point. So the major, I guess, the burning factor in this particular issue is the you can say the wealth distribution among the both the communities. So what are the Methi communities, right? It generally covers the entire you can say urban area of the entire state. And the other community, the Kuki, generally it's a tribal, and they have very less amount of resources available with them. And as this the Methi community is getting transferred to the scheduled tribe status, then I guess the other community is getting some sort of insecurities because of having the scheduled tribe as well as the higher amount of, you can say, wealth distribution among with that particular Methi community. So it is making them empower in both the both the states, including the wealth as well as the government reservation and all. So they might use these powers in you can say in a wrong manner to obtain certain sort of government facilities and all. So that's why this all the fights and everything is getting erupted. What I want to add is the fight like this Manipur crisis usually happens. It is about the aftermath of the war, the burning Yeah. of the government institutions, the looting and all the like the damages that done to government properties and the roads, building, etc. So what differently could have been done so that this destruction could have been, could, if there is any other way that this whole proceeding of the war could have happened so that destruction could not have happened, let's talk about that maybe. See, generally I the would thing like is to that add that What law and order must have done, because obviously there has been a lag from the law and orders. That's why this whole facade has been going on. yeah, also we I can say would that like actually to add that there is a delay in law and order system, but we should also keep in mind that Manipur is a hilly state. So if we have to cover, let's say, even 10 kilometers, it is going to at least take nearly 2 to 3 hours, which is usually late in hills. So we will have to see that as well, the demography and the demographical area of Manipur as well. Apart from that, this should have been done previously when the tribes were being shifted to ST category, or that they should have, when Methi people Kuki people started protesting, then the government they should have taken their consideration. Why are they protesting? And they could have easily resolved at that point, I would say. But since cross-border terrorism was there, narcotism was there, and many people who were trying to create havoc in Manipur, they also started using this opportunity. So it suddenly took a blast. This whole situation took a blast, and that is why whole this vandalism thing is happening in Manipur. Methi people already have SC and OBC status in this state, but Kuki people are allowed to uh, the, buy land in plains, but the Methi people are not allowed to buy land in hills. This is a two-way unfair Abhishek, I means of beg to differ, but I think the whole point of fight was that Methi people are asking to be included in scheduled tribes. So I don't think they are already on reservation. They were basically they are they already were on in basically reservation, but OBC they are category first. wanted ST status to buy the they are not allowed to buy the land on hill status. But Kuki peoples are allowed to buy the land in plain areas in Imphal region. But Methi people are not allowed. Methi people wanted status to buy the hill land. To they both the tribes wanted fear for future. They want to expand. All wants administration control. Both wanted administration control. So why there is Currently, anti Kuki community feelings going on? Because the
incident started when there was a I Yes, mean, yes. These type of anti-cookie feeling incidents has been they spreaded happened a lot among the back Manipur. previously, but I would There like are to add on that. anti-cookie and anti-Methi also. Uh, uh, Both tribes are wanted administration control. Cookie thinks that Methi people are controlling themselves and making uh, the policies according that favors Methi only. They are since 1960, I don't remember, but previously the CMs, previously 5 4 CMs are only Methi peoples. Abhishek, I would Uh, like to add on that initially Kuki people they protested. They protested silently. But their fear, so like many firstly, people the being included into ST, they had a fear that this will be reducing their entitlements. yes, And with rallies, within I think few months, the rallies they turned into spiraling violence, and it is going on. yes, This has firstly been the cleared by our Methi. respectable Home Minister that cross-border terrorism is also a major concern why the violence is happening in Manipur. Friends, I would like to Yes, add cross-border And as terrorism also is the a reason. bomb attack by the drones also take the new turn in the conflicts. Yeah, use of sophisticated weapon. It is being Yes, used. They yes. are being used. Yes, Drones, yes, missiles. it is due to the Sorry, Myanmar reason, due to infiltration, due to China, Myanmar, and the drug peddlers support Kuki peoples to buy these weapons. This is the reason, तेजस तू and बोल क्यों नहीं these रहा है? तेजस और ऋषभ बोलो कुछ कुछ तो आइडिया आ गया होगा बोलो बोल क्यों नहीं रहे? Uh, so generally, means okay, English. Sorry. So ideally, this when these things are started means the first protest and everything started about this allocation of the scheduled tribe status between the both the community between the ask from the Methi community. So ideally, the state government should be intervened in this, and ideally, this distribution of the scheduled tribe status, I think, should happen on the basis of the wealth and whatever wealth and what is the family background of that particular family, and not basis on the only the caste, whether it's a Kuki or Methi. That's why maybe the Kuki people are getting that insecurities. If these people got included into the ST, then they will misuse those rights which these people get. Last 2 minutes. also, see, Last I two would minutes like to. so फटाफट now, See, guys, we should look way for what is the way forward for this Manipur crisis. I would like to add that limit of arms is the one step, and increasing connectivity is the major step we can take to, I would like to add on that because the since late 90s, the northeastern states, especially like Manipur and Sikkim, they have been neglected by the central government. We need to yes, ensure that Manipur situation, it is being closely monitored by the central government and necessary steps are being taken. But as we speak, it will take some time. Obviously, like even from late 90s, armed rebellions were present in northeast Manipur. Manipur was the main hub of that. So if we want to like bring peace in Manipur, we will have to first like cordon off all the armed rebellion forces. Then only we can do something. Otherwise, I don't think we would be able to even solve this problem in the next 20 to 30 years. Okay, thank you, Ankush. Uh, what I feel is these kinds of conflicts between two communities are happening today. It will happen tomorrow. It is a fight between a two conservative communities, which can be happen at any time. What is my main concern is the lack of diplomacy. Communities usually just start a riots. So and why do they begin with a riot? Because they don't have trust in their judicial system, and the lack of law and order
and because of the lack of law and order, this kind of destruction is were not able to be curbed. So as so we should start we should start as a, I mean the with the help of a central government, there should be a mediator between these two communities, and they should start a dialogue between them. And I mean they should intervene more than they are I mean they should intervene more, because the conflict is conflict has gone out of hand. And with the help of a dialogue and diplomacy, I think we can come to a point, we can come to a conclusion, and as soon as this conflict resolves, it would be better for a whole nation. Thank you. चलो ठीक है, ओके, इसको रैप करते हैं। मैं बताता हूँ, मैं देखिए कुछ आई फिगर्ड आउट समथिंग। देखो क्या है, व्हाट इज हैपनिंग। टॉपिक पे पहले तो टॉपिक से ना डाइवर्ट नहीं होना, यू हैव टू स्टिक टू द टॉपिक। ठीक है बच्चों। और दूसरी चीज, इसको बाइफरकेट किया करो। जैसे मान लो, अगर मैं बताऊं मणिपुर में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो ओवरव्यू ले लो सबसे पहले। यू हैव टू फिगर आउट, टेल एन ओवरव्यू इन एनी डिस्कशन। एसएसबी के बैलेंस में अगर मैं बात करूं, आज मैं कुछ तुम्हें लिटरेचर मतलब कुछ कंटेंट ऐसा भेजूंगा, रुद्र सर का भेजूंगा, जिसको पढ़ना समझना कि कैसे कंटेंट को फ्रेम किया जाता है। जैसे पहले तुमने बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि ब्रीफली यू हैव एक्सप्लेन हिस्टोरिकल एंड एथनिक टेंशन। वहां तुम्हें पता है कि हिस्टोरिकल और एथनिक टेंशन है मणिपुर में, फूकी मैती में चलता रहता है ना, वहाँ पे ऊपर नीचे चलता है सिस्टम, है ना। तो ये वाला है पंगा। फिर इमीडिएटली क्या चीजें ऐसी हो रही, इमीडिएट ट्रिगर्स क्या हैं, स्पेसिफिक इवेंट्स का एग्जांपल दे सकते हो कि रिसेंट एस्केलेशन क्या हो रही है। जैसे लैंड राइट्स पे क्लैसेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल प्रिजर्वेशन पे, वहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे वहाँ पे क्लैश हो जाते हैं, लोकल ग्रीवेंसेस सॉल्व नहीं हो रहे इस वजह से। कि करंट सिचुएशन क्या है, कि कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस आप कर रहे हो, उसमें गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, कर्फ्यू लग रहे हैं, इंटरनेट बंद हो जा रहा है वहाँ पे, सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं। उसके बाद आप एक चीज ले सकते हो कि यार इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन है, हाउ मेनी पीपल आर, है ना, ये चीजें। तो इस तरीके से तुम लोग ये सारी चीजें हैं। उसके बाद फ्यूचर इम्प्लीकेशन, भविष्य में क्या हो सकता है, पॉसिबल सिनेरियोज क्या है, कि वायलेंस खत्म कैसे होगा, पीस टॉक के माध्यम से होगा, पॉलिसी चेंजेस के माध्यम से होगा, और लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस क्या होंगे वहाँ पे। कि वहाँ पे अल्टीमेट एम तो हमारा ये होना चाहिए ना कि कम्युनल हार्मनी आ जाए, गवर्नेंस अच्छे से चले, डेवलपमेंट हो मणिपुर में, बाकी स्टेट की तरह आगे बढ़े मणिपुर नॉर्मली, है ना। तो यू कैन ऑल्सो गिव सम सजेस्टेड सॉल्यूशंस ऑल्सो भविष्य में। मतलब आप एक सजेस्टिव नोट पे भी इसको खत्म कर सकते हो कि डायलॉग एंड नेगोशिएशन के माध्यम से। देखो बंदूक तो चल ही रही है, पर डायलॉग एंड नेगोशिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पॉलिसी रिकमेंडेशन आप दे सकते हो कि सरकार को कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लैंड रिफॉर्म्स आ जाए, कुछ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाए, टेंशन खत्म हो जाए। तो इस नोड पे इसको खत्म करो। वहाँ पे बहुत सारे एनजीओ भी काम करते हैं, सिविल सोसाइटी के अंदर बहुत सारे एनजीओ भी वहाँ पे एक्टिव हैं। तो इस टॉपिक के बारे में मुझे एक चीज समझ में आई कि तुम लोगों में से बहुत ही कम बच्चों को पता था। मेजरली ऑफ यू पीपल वर जस्ट स्पीकिंग फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग। अपना नॉलेज बेस बेटा एक्सपेंड करो तुम लोग, प्लीज एक्सपेंड योर नॉलेज बेस। अगर आपको नहीं पता और मान लो ये टॉपिक किसी एक के भी जीडी में, एक के भी एसएसबी में फंस गया, और हमने यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करी, हमें पता है कि सर ने बोला था कि इसको पढ़ लेना, मैंने तुम्हें जो वीडियो भेजी थी उसको पढ़ लेना, और रेफरेंस वीडियो एक दो और भेज दूंगा। बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं यूट्यूब पे, जो कि मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, दे आर आई एम इनटू कंटेंट एंड यूट्यूब वाला गेम ना, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ध्रुव राठी की वीडियो देख सकते हो तुम देखने को, तो क्योंकि उससे तो मुझे इनपुट मिल जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, मेहनत होती है कंटेंट में। स्टडी आईक्यू की वीडियो आप देख सकते हो, स्टडी आईक्यू आईएएस, बहुत अच्छी टीम है, मेरे पुराने दोस्त हैं सारे, मैंने वहाँ पे काम भी किया है। उनकी वीडियोस आपको मैंने भेजी थी, इन्फॉर्मेटिव होती है। इसके अलावा जो है, किसी भी क्राइसिस के पीछे कुछ अच्छे अच्छे क्रिएटर्स की जो मोस्ट वॉच्ड वीडियोस होती है वो देख लिया करो, अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, एंड देन यू कम हियर एंड देन डिलीवर। अब इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँ, अंकुश ठीक बोलता है, अंकुश वही डेटा की कमी रहती है बस थोड़ी सी, बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। तेजस ऐसे तू लेट स्टार्ट करेगा ना तो दिक्कत में आ जाएगा। इनिशिएशन करना होता है भाई, इनिशियल लेवल पे बोलना है। जब तुम्हें बोला गया तब आपने बोला, आपको वहां पे कोई मोटिवेट करने के लिए शिवम सर नहीं बैठे हैं। सेम वाज द केस विद संकेत। संकेत जो है बोला थोड़ी देर को, बाद में बोला बहुत। मैंने संकेत के आगे ही लिखा है, बाकी सब बच्चों मुझे संकेत के आगे में
मैंने ये लिखा है कि देखो लेट लेट स्टार्टर संकेत, इतना मौका नहीं मिलेगा, इतनी देर में तो जजमेंट बन चुका होता है भाई टेक एंट्री में। Yes, sir. Yes. खेल खत्म कर देंगे वो तुम्हारा। अभिषेक बोलता ठीक है, अभिषेक के साथ पंगा कुछ नहीं है, अभिषेक बोलता ठीक है, अभिषेक ऑल्सो लैक डेटा, बस अभिषेक लॉजिकल हो सकता है और बट विद ओनली प्रिपरेशन, डेटा लेके आ तू बस, तू बेहतर कर सकता है बहुत। ऋतिक कोई पंगा नहीं है, इनिशिएट अंकुश ने किया, ऋतिक ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है, बढ़िया, बोलने में भी कोई तकलीफ नहीं है, अंग्रेजी भी ठीक है। तो यही था आज का, तो मेरा जो था मेरी साइड से तो इंडिविजुअल फीडबैक यही थे, बाकी तुम लोगों को कुछ पूछना है या बोलना है तो बताओ। ये टॉपिक ऐसा है कि आने की संभावना है, जब तुम लोग जाओगे ना कुछ समय के बाद में ना 10-15 टॉपिक्स की लिस्ट डालूंगा, उनको तैयार कर लेना, है ना। आई विल सोर्स फ्रॉम माई स्टूडेंट जो एसएसबी में जा रहे हैं बच्चे, कौन कौन से टॉपिक अभी एसएसबी में चल रहे हैं जीडी के, ठीक है। एक तो मैं एक और इन्फो देने के लिए, महिपाल महिपाल सर की वीडियो देखा करो, स्टडी आईक्यू पे महिपाल राठौर की वीडियो देखा करो, महिपाल सर बनाते हैं, बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं। डिफेंस के लिए यू कैन फॉलो मी, डिफेंस अपडेट्स आने वाली है मेरी, संडे को पहली वीडियो आ जाएगी, वीकली डीएनए डाला करूंगा, और उसकी पीपीटी तुम लोगों को ग्रुप पे दे दूंगा जिस ग्रुप में तुम लोग हो, ठीक है। सो अच्छा था, इट वाज गुड गाइस, वी विल इम्प्रूव विद एवरी पासिंग, हम लोग धीरे धीरे ही इम्प्रूव करते हैं हर चीज पे। पर ये टॉपिक में कहीं लिखते जाना है ना, 3 टॉपिक हो गए ना, लिखते जाना, और इन पे अपना अपना बेस बना लो, क्योंकि ऐसा नहीं कि तुमको एग्जैक्ट टॉपिक मिल जाए, पर हो सकता है रिलेट करता हुआ टॉपिक मिल जाए, और वहां से आप डेटा उस वाले में भी चिपका सकते हो, ठीक है। तो सारा गेम नॉलेज और कंटेंट डिलीवरी, बस मेरे को यही कहना था। बाकी इट वाज अ गुड शो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वी विल पुट इट ऑन यूट्यूब आफ्टर सम टाइम, एंड किसी को कोई भी सर दुख हो, ये मीटिंग का टाइम खत्म हो जाएगा बीच में, थोड़ा जल्दी बोल। हाँ, सर वो अगला जीडी का टॉपिक सर कुछ इंटरनेशनल टॉपिक पे करें, क्योंकि सर अगला एक जीडी चीज टॉपिक है चल कि, रही थी सर। हाँ इंटरनेशनल टॉपिक उठाएंगे, मंडे को होगा अगला जीडी, है ना, थर्टियथ ओके को, थर्टियथ सर। को। वो सर वो ऐसा सोच रहा था कि सर कि वो जो जब से वॉर चल रही है सर, ये कभी इसराइल की चल जाती है, कभी यूक्रेन की सर,